Assalamu alaikum everybody, this is Saad Malik and recently we started making some informative vlogs. So this vlog is going to be about the best practices that you will use when writing a CV or a resume or whatever you want to call it. Because why I believe this is very important, because it's a starting point, the starting point of where your job hunting journey starts. Or agar those specific things are not covered in a CV, then it might reduce your chances of actually reaching to a certain level within the hiring process. So without further ado, I'll go through them one by one. If you have any questions around this vlog or any of the question, please do comment, do let us know if we can help you in any way through that journey. So first and foremost, I think जो सबसे ज़्यादा important चीज़ है within a profile or a CV, it's about honesty. So you cannot lie about your experience or your education or any of the background that you would want to put in the CV, because उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि when your interview process will start, जो बंदा सामने बैठा होगा, whether it's the hiring manager or it's the HR manager, because the amount of interviews that they take on a daily basis, on a monthly basis, they will see right through you. कुछ cross questioning ऐसी होती है. Some of the experiences are quite technical. उसमें अगर इंसान आपसे कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछ ले और आप आएँ बाएँ शाएँ करें, when you don't know the right answer, I mean when you don't have the right experience और आपने लिखा होता है कि उसमें experience है, then they will be able to tell. और वो आपका not only will it limit your chances within that company, but I think companies usually talk. People, it's a small world, it's a small industry, so one way or the other somebody will find out कि ये अपनी CV पे सच नहीं लिखता. So honesty is very important. हाँ ठीक है, you know, like 10% you can play around with the words, but not more than that. For example, if you've been handling an account, let's say which was giving you a revenue of, let's say 50 million a year, you can say हाँ जी 55 million तक मिल रहा था मुझे उससे, या 60 million, या मेरी achievement 10 नहीं 12 million थी, just to but ये कि overstate, बहुत ज़्यादा overstate नहीं करते. So you know, honesty is of utmost importance. Second is what to include. So first तो हमने honesty cover कर लिया, but what all you need to put in a CV. So first and foremost is education with the dates कि आपकी क्या क्या education है. Then उसके बाद obviously experience आता है कि right from the starting till your recent experience, dates के साथ start date, end date और सबसे recent experience. So एक उसमें चीज़ ये होती है जब आप इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे होते हैं, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू गिव 1 or 2 sentences अबाउट ईच कंपनी दैट यू वर वर्किंग विद, बिकॉज हायरिंग मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक कंपनी को दे स्टार्ट लुकिंग अप दैट कंपनी. सो अगर तो कंपनी बहुत नोन है तो देन इट्स नॉट अ नेसेसिटी, बट अगर कंपनी इतनी नोन नहीं है, इट्स अ लोकल कंपनी, देन आई थिंक इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू पुट इन सम वर्ड्स अबाउट द कंपनी बिफोर पुट इन योर एक्सपीरियंस. थर्ड है जी स्पेशलाइजेशन. सो आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है, मतलब ये कि आपने कोई ट्रेनिंग्स ऐसी की हुई हैं विच एक्चुअली इंक्रीज योर चांसेस फॉर अ स्पेसिफिक रोल. अगर वो हैं तो डू मेंशन देम, वो भी डेट के साथ. के कभी कभार ऐसे होता है कुछ ट्रेनिंग्स, बिकॉज लेट्स से टेक्नोलॉजी सेक्टर जिसके अंदर it's evolving over time. So you know 10 साल पहले टेक्नोलॉजी was different, now it's different. So maybe आपने 15 साल पहले कोई ट्रेनिंग की हो, उसका लिखना now it's kind of irrelevant. So timeline के साथ बहुत पुरानी ट्रेनिंग ना हो, अगर बहुत पुरानी है so make sure it's still relevant in the market. Then we come to the skills. एक skills का section होना चाहिए where you know if it's a computer competency or it's some other skill that you have, कोई language है, या let's say किसी other sector के अंदर आप चले जाएं, कोई specific skill है which you think which is unique in you, or actually it's a market standard to have that skill, then you must write that. Then any of the trainings that you would have done in the last couple of months or years which actually make you a stronger candidate for a specific profile, then you must write that. So that was about what to include in the CV. Then the next one is what to focus on. So we always must focus on the quality than the quantity. So it's not कि आप कि जी 25 पेज की अपनी CV बना ली और उसके अंदर जो है ना क्वालिटी नहीं है. So उसका जो है ना you need to focus on the facts and figures. So अब ये कहना कि जी मैंने you know I helped the company achieve a lot of revenue versus saying I helped achieve the company 20 million worth of revenue. So इसमें
बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है जब हायरिंग मैनेजर उसको रीड करता है, या एनी अदर पर्सन व्हेन ही वुड रीड दैट एक्सपीरियंस, इट वुड मेक अ लॉट ऑफ वैल्यू, it would differentiate you. So focus on percentages, year on year growths, or any other facts and figures जो आपकी industry specific. I mean, I can't cover all the industries, but you would know your industry best. So आप थोड़ा सा research करें about your industry, कि what really matters in your industry, कि क्या चीज़ ऐसी आप लिखेंगे which will increase your chances, and those need to be honest figures. Obviously, I already told you that. अगर उसमें आपने ये भी मेंशन करना है कि नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स, आपने लेट्स से कंस्ट्रक्शन को अगर फोकस करते हैं, कितने प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है, या अगर लेट्स से कस्टमर सर्विस की बात करते हैं तो क्या आपका रेट था उसके अंदर, कितने आपने लेट्स से कस्टमर इंटरेक्शंस थे इन अ मंथ, इन अ ईयर. सो जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपकी इंडस्ट्री या रोल स्पेसिफिक होते हैं, वो डू मेंशन दोज. देन वी कम टू के जो अचीवमेंट्स होती हैं बेसिकली. आपने अपना, मैंने पहले बात की एक्सपीरियंस के बारे में, वो तो आपने लिख दिया, बट एक्सपीरियंस को आपने किस तरह लिखना है कि आपने यू हैव टू फोकस ऑन द अचीवमेंट्स रादर देन सेइंग कि जी मेरी डे टू डे जॉब ये थी, XYZ मैं ये करता था सुबह से लेकर शाम तक. प्रॉब्ली इफ देयर लाइक 100 कैंडिडेट्स, ऑल ऑफ देम वुड राइट द सेम थिंग, बट आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट ऐसे कर सकते हैं कि यू वुड राइट कि जी मैंने उस दौरान व्हाट वाज माय biggest achievement. So each role try to put in as many achievements which actually within your industry are known to be something substantial. So इस सेल्स में होता है कि आप लिखते हैं कि जी मेरी इस रोल के अंदर मैंने ये मेरे टॉप के 5 प्रोजेक्ट्स थे, उन कंपनीज के साथ मैंने काम किया था, सो वो आप मेंशन कर सकते हैं. देन इस तरह के आपकी लेंथ कितनी होनी चाहिए CV या प्रोफाइल की या रेज्यूमे की, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. सो I think, I mean, so people, it can vary from industry to industry, but मेरा अपना ख्याल है कि which I've seen as well is, I think 2 to 3 pages is more than enough when you're talking about your experiences. फिर उसमें अगर आपका experience बहुत ज़्यादा आ जाता है, then you need to focus on something which is relevant. आप maybe you would not focus on the initial few jobs that you did. आपने कहीं पे internship किया है, आप वो फिर निकाल देते हैं as you grow senior in your career. So keep your experience most relevant, most applicable to a certain role, and that way you can keep your CV to 2 to 3 pages. फिर दूसरा ये कि a lot of people who make mistake is they have one CV and which they use in all of the roles that they're applying for. ऐसे नहीं होता. ज़रूरी नहीं होता कि आप अगर सेल्स में काम कर रहे हैं या आप मार्केटिंग में काम कर रहे हैं और आप किसी और इंडस्ट्री में अप्लाई करना चाहें, तो ये नहीं होता कि आप वही CV उठा के उसमें भी अप्लाई कर दें. सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज़ टू हैव मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द सेम CV एंड देन यू पिक एंड चूज़ कि आपने कौन सा एक्सपीरियंस, उसमें कौन सा स्किल पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है, किस अचीवमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है. अगर आप सेल्स रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो आप अपने सारे एक्सपीरियंस में सेल्स को ज़्यादा शो करेंगे. अगर आप मार्केटिंग में करें तो आप देखेंगे उस वाले रोल्स के अंदर आपने कौन सा मार्केटिंग एस्पेक्ट था जो आपने अचीव किया था. इसी तरह अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है तो आप देखेंगे जी उन रोल्स के अंदर आपने कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसमें जो प्रोडक्ट फोकस थी. सो that's how you have the same CV but you have different variations of that CV. So this is very important. You can't have one CV that works for every role. That just does not work. Then and another thing which actually I've also struggled all my life is to whether to have a cover letter or not. So this is a kind of a question actually probably I'll bring in one of my friends from HR or something to answer that. But मेरा अपना ये ख्याल है कि मैंने वैसे कभी ज़िंदगी में कवर लेटर यूज़ नहीं किया unless किसी ने कहा हो कि जी I need a cover letter. So then you prepare it and then you send it to one. Just like you can't have one CV which fits all the requirement. इसी तरह भी you can't have one cover letter that you send to each and every employer. So अगर तो एम्प्लॉयर ने मांगा कि जी मुझे कवर लेटर चाहिए, कुछ इंडस्ट्रीज़ में इट्स अ नॉर्म टू हैव अ कवर लेटर. बाकी इंडस्ट्रीज़ में लाइक आई सेड आई हैव नेवर यूज्ड अ कवर लेटर इन माय लाइफ. सो अगर तो एम्प्लॉयर ने मांगे कि जी आई नीड अ कवर लेटर, देन यू मेक वन एंड देन यू हैव इट वेरीफाइड बाय समबडी, या किसी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है प्रॉब्ली आपके सर्कल में, आप कहें जी आप इसको पढ़ दें. इफ़ यू थिंक यू कॉन्फिडेंट विद इट देन जस्ट गो विद इट. But that would make a difference. अगर एम्प्लॉयर ने कहा है, if they specifically need it, then you better have it.
Then references. So the last part, I've seen a lot of CVs के वो जी 5-10 references लिख दिए होते हैं, which sometimes are required, sometimes are not required. Then again आपकी अपनी industry पे depend करता है कि references required है नहीं है. अगर लिखना है तो don't write more than 1 or 2 references. If you don't want to write the references, but there, you just want to mention that it can be provided, so then some CVs I've seen कि जो लिखा होता है कि references can be provided upon request. So it's however, what you can do is what I do, what I've seen a lot of people do as well. They put like a link of their LinkedIn profile. So वो इस तरह एक किस्म का link मिल जाता है where somebody can click and they can go and see कि references कौन कौन से हैं, इसके connections क्या हैं, इसके experience क्या है. So that actually provides you with एक किस्म का to give a lot more information within less number of pages. So I think these points are very important when you are making your CV. These are best practices. I will also cover in one of my vlogs, one of our vlogs, कि जी best platforms कौन से हैं. मेरा personal favorite, which I mentioned in my earlier vlog as well, in our earlier vlog, was that I really liked LinkedIn. LinkedIn has really, I think, transformed in the last decade or so. पहले इतना popular नहीं था, but अब I think it's a norm. It's actually a requirement in the industry कि जी आपकी LinkedIn profile ज़रूर होनी चाहिए. The first thing that I check जब भी मेरा कोई नया कोई contact बनता है, किसी से phone call होती है या किसी से मिलता हूँ, the first thing that I check is their LinkedIn profile, because that actually gives a perspective of who you're dealing with, who's the person that you're talking to. Also, I think one vlog that we'll make is about some of the interview tips, which from my own experience, I've given a lot of interviews throughout my life. So, मैं किस तरह उसको, how I manage that, how do I prepare for that. So that also probably in one of the vlogs that we'll cover. So that's all for today. But if you have any questions, if you want me to further elaborate on a point, please do put it in the comment. Any questions that you'd like me to answer. So thank you all for watching. Toodaloo. Bye bye.